ಸಡಕ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ 2026 ಸುರಕ್ಷಿತ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರದ ಅಭಿಯಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18 ಮೆಗಾ ಅಭಿಯಾನ ಇದಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. We are talking about 20% of Indian deaths are being because of pedestrians, right? Why do pedestrians cross highways? If we do not have the engineering from them to get from one side to the other, you are going to get that kind of behavior. The other thing is, KK, the mindset. When I want to speed, an educated person or a person who's just, or one, it is young blood, you're Josh, you want to try it. But there are also those who want to test that edge. How long can I be on the edge where I am perhaps between life and death, and that's giving me a thrill? At that time, what does one tell themselves to control that kind of an impulse? It's a very difficult solution to arrive at. At the most I can say is that लोग कहते हैं ना जब गुस्सा आता है तो दस्तक की नींद वही होगा शायद एक तरीका, because that's an individual case. But I feel there are two kinds of people who get into speed. One is who pre-decides that रात के समय मैं गाड़ी निकाल के zoom जाऊंगा, एक तो वो है. तो ऐसे लोगों का तो खैर वो जो लातों की भूत वाले जो चक्कर है ना, जो वो ही करना पड़ेगा. दूसरा है in which the speed sort of gradually creeps into you. You're on a highway and you're on 40 and 60 and 80, 120, and suddenly you realize, oh, 120, oh, this is, thrilling. That's where you should be able to take a deep breath and come back. So that can cause accidents, and it's directly proportional to your reflexes, because the greater speed you are in, that error becomes magnified. Little error can become big error. So you need to appreciate that and bring it down. And I would say, instead of driving, one should be taught to enjoy the drive. If you start enjoying the drive, automatically, I think things will fall in place. वो गाड़ी में जो स्पीडोमीटर होता है ना, उसके एंड में 250 क्यों लिखते हैं? वो हमेशा जो चालक होता है वो कहता है यार इधर तक जाना है मुझे, नॉट रियलाइजिंग इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी सबकॉन्शियस एंड अ वेरी ह्यूमन टेंडेंसी. आपने उसको एक लिमिट बता दिया है, एंड यू ऑलवेज हैव दैट थिंग इन माइंड, आई मस्ट रीच दैट लिमिट, but you're not understanding that it's going to cause you a lot of problem. You have the limit of the Everest and everybody wants to climb there because you went to the highest point. Now that is achievable, but are we going to achieve that 250 or not? जब आपके पास न सिर्फ फिल्मों में, रियल लाइफ में भी आपने गाड़ियों का आपका शौक है, प्लस तेज रफ्तार आपने गाड़ियां भी रखी हैं और चलाई भी हैं, वो मौका जो के कह रहे थे, वो मौका, उस मौके से कोई भी ड्राइवर अपने आप को कैसे वापस करे जब उसे लगे कि हाँ अब हद से बाहर जा रही है, वहां पे कौन सा मेंटल. This is purely a very personal, psychological, mental thing. You cannot depend on technology to change that. This is what I feel, sir. No. Your mind is not entirely run by technology. I mean, you would be more efficient in saying that the largest data bank in the world is this, and once this gets saturated, then you start making mistakes. और एक छोटा सा ब्रेक अभी लेते हैं. चर्चा सड़क सुरक्षा अभियान में जारी रहेगी और खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे. अब ब्रेक के बाद एक ऐसी आवाज